शॉट कैसे होता है. एंड देन 3 दिन शूटिंग की, फुल शूटिंग की 3 दिन हुई प्रॉपर वो. एंड 3 दिन बाद जब वो प्रिंट्स हम देखते हैं तो आई नेवर फॉरगेट व्हाट सर सेड. इसे शिरा देखते ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स को जॉन्डिस हो गया है. एंड लाइक जो है आवाज खानी इट वाज अ डिजास्टर शूट, बट या दे हैड देयर ओन बैकअप. He just wanted to give me a chance, but I learned a lot from that, and for like the confidence. In between, I got selected for one of the internships. I got selected. मैंने apply किया था to do my summer internship at Toyota headquarters in Japan. So I went to Aichi, Japan, Toyota, and I spent like 45 days there. अच्छा experience रहा. फिर after that I came back. वापस आने के बाद माइका started this course called PGPCA, Postgraduate Program in Communication Management and Entrepreneurship. And they sent me a call. उन्हें कॉल भेजा. तो लास्ट ईयर के रिजेक्टेड थे उनको कॉल भेजा था. अच्छा ही बता रहा है यार, लास्ट ईयर रिजेक्ट हुआ था कॉल भेजा. तो मैंने कोर्स का कंटेंट देखा. दिस इज नाइस. They have this concept called Concubator, which they sold very well. जो Concubator कहते हैं, you come and if you have a business idea, we'll support you, we'll give you office space and all these things, so that you can take off on your own. So I came here, I met the people, and I told I'm doing finished my 1 year of MBA in Wellington. I did my internship here, but this course is fascinating me. I'm thinking of joining it. People they were very surprised, but finally I decided, okay, I'll do this. In the meantime, there was an advertisement in newspaper for Sony Pix launched a short film festival called Sony Pix Short Film Festival, inviting films from first-time filmmakers. So I decided that this time I should participate since I now have some experience by working on them. So I have a liking for this thriller films. I have a lot of Spanish films and all. So first I wrote a film, small short film called The Cursed. So मैंने 2-3 दोस्तों को दिखाया, भाई कैसा है. सबने बोला वाह बड़ा ही बढ़िया स्क्रिप्ट है. आहट के हर दूसरे एपिसोड में यही होता है. So that got rejected. Then I tried adapting 2-3 Gujarati plays, but then nothing worked out. On 25th June 6 or 7, I don't remember now. I was watching this film called Little Miss Sunshine. So I got very inspired by that film. I finished the film at रात को midnight पे, and then I wrote a film called The Journey. Now, Journey was about the pains and agonies of growing up and realizing the true meaning of success. The plot was directly lifted from Little Miss Sunshine, and then I used some experiences from my own life to make the work. Then it was very costly to shoot it in Mumbai, so I decided that I'll shoot this film in Ahmedabad. अब जो है अहमदाबाद के लिए अब मेरे पास ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है. 15 जुलाई was the last date of submission, and it was already 26 or 27th of June. So I called up one of my friend in engineering, जो मेरे साथ engineering में था, तब भी engineering नहीं कर रहा था. So it took like 6-7 years to finish his engineering. I called him up and I told him that I am making this short film, and you are the chief assistant director, so you need to arrange for these things. Chief assistant director Sudeep got very excited, and he arranged everything. Now. So but it was a very underdog team. My DOP, cinematographer, was a guy who has been rejected by the Gujarat film industry as well. So फिर क्या करें. अब हम बैठ के यहाँ पे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें शूटिंग करना है. 29-30 will shoot, and then again we will shoot on 7th and 8th. तो 29-30 हमने शूटिंग की. इस बार टेक्निकली फिल्म अच्छी आई, पर बाकी सब चीज अच्छा नहीं आ रहा. हर चीज में प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है, डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम है. The film was in English. These people are non-native speakers of English. आधे फिल्म में एडीज लिखते हैं. तो जो हमने 2 दिन शूटिंग किया उसमें से बहुत ही कम फुटेज हम यूज कर सके. तो 5 दिन हमने फिर बैठ के प्लानिंग की इसको कि नेक्स्ट हमारे पास 2 दिन था, सैटरडे एंड संडे. सैटरडे को सबको बोला कि हमने लोगों से उधारी लेके ये पिक्चर बना रहे हैं, पैसे लेके. अपने पैसे भी नहीं है हमें. अगर कल 2 दिन के अंदर ये फिल्म शूट कंप्लीट नहीं होती है तो सब कुछ जाएगा. तो एवरीबडी पुट देयर बेस्ट एफर्ट. सैटरडे को हमने काफी शूटिंग. अब संडे मॉर्निंग मेरा माइका का इंटरव्यू भी है और शूटिंग भी करना है. तो 2 गाड़ी कास्ट एंड क्रू लेके माइका के बाहर खड़ा किया और अंदर में इंटरव्यू देने गया. सो इंटरव्यू टेबल में जो मैं जस्ट आई पुट माय स्क्रीन प्ले एंड बोला कि मैं ये कर रहा हूँ. एंड सो ऐसा है. एंड लाइक 25 minutes माय इंटरव्यू वेंट इन ओनली 1 question, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो
after the interview, they told me that Shilarita will love to take a guy like you, but the problem is that you have quit California. Now you are planning to quit Wellington. You have to give us in return that you won't quit Mica. So finally I got selected and I joined Mica. अब Mica आने के बाद क्या था कि मेरे जो बाकी बैचमेट्स थे, उनको क्या होता कि यार सारे तो अपने Mica, business school and all these things. तो पहले 3 महीना हर कोई हवा में ही रहता है. But I had already studied 1 year of MBA, so मेरे को उतना वो नहीं था, वो तो इनिशियल चार्म एंड एंथुसियाज्म होता है वो मेरा, तो आई वाज लाइक वेरी फोकस कि यहाँ पे आया हो तो अब कुछ करना है. सो वी हैव दिस कोर्स फॉर कॉर्पोरेट वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें सबको प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, बिजनेस प्लान अपडेट करना होता है. तो आई आल्सो मेड अ प्लान व्हिच लुक्स वेरी गुड ऑन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग इन रियल लाइफ दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल. तो मैंने भी प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंट किया, लोगों को पसंद भी आया. And they selected 26 businessmen for the next round of interviews. तो मेरा भी 26 में select हो गया. अब मैं सोचूं कि 26 business plans means 26 new companies, 26 new names. So what I can do so that my company's name is मतलब सबकी जुबान में मेरी कंपनी का नाम. So I used to listen to a lot of online radio. बहुत ऑनलाइन रेडियो में सुनता हूँ. So I bought a cheap radio broadcasting software called Pirate Radio. And I started this called Full Marks Radio on campus. Now it is illegal to play copyrighted songs without a Creative Commons license, but we played from everything from Altaf Raja to Pink Floyd. Or like it was not rocket science, but it was relatively new to people. So लोगों को पसंद आता है and all these things. So मैं assignment reminders, birthday reminders अपने hostel के रूम से ही चलाता था. And लोगों को like थोड़ा fascinated होते थे. तो मैं आज English classics है, आज romantic songs है. People will dedicate songs to their boyfriends, girlfriends and all. तो धीरे-धीरे सबके मुंह पे Full Marks, my first company, वो word सबके मुंह पे आ गया. So my purpose was solved. In the second round, there were like some CEOs and CEOs of some top-notch companies. One of them was Mr. Jay Rupare, COO of Azure. Now, Mr. Jay Rupare, I told the panel that I have done this to do branding for Full Marks. Mr. Jay Rupare got very much fascinated. He told me, Shilarita, I run a company with a workforce of 1,800 employees and offices in India, China and United States. Now we have this bulletin board ka thing. Can you replace it with an intra-corporate broadcasting system? तो मुझे समझने में टाइम लग गया. इंट्रा-corporate broadcasting system क्या है? फिर मैं जनरली ना बोलता नहीं हूँ. तो I said yes, I can do it. So अब ये नहीं पता कि अब उसको करना कैसे है, क्योंकि I used to run Full Marks Radio on an unsecured network. कोई भी कहीं से भी सुन सकता है. And when you are doing it for a corporate, it needs to be on a highly secure network. So थोड़ा बहुत R&D किया, जो है hidden price से सब सीखा है. So finally we figured out a way how to make it password protected. Then I made a business plan, पूरा detail वो बना के I sent it to Azure and sent a copy to director Mike. Now that Azure thing never took off. We had 2-3 meetings. तीसरे मीटिंग से मेरे को पता चल गया कि इनको करना है नहीं. मेरा टाइम खाली होकर है, तो चौथे मीटिंग से मैंने जाना बंद कर दिया. So but Mike got an impression that I got my first. There's a benefit of doubt. So out of the 26 business plans, Full Marks got selected to be the first company to be incubated by Mica Entrepreneurship Development Center. So you have a credibility ka stamp on it. But Mica selected my radio wala plan. And like they said, this is very good, ye karenge, wo karenge. But I knew this is not a good plan. Why? Because first of all, it doesn't have any revenue model. खास तुम वो वेबसाइट में एड पे क्लिक करके कितना रेवेन्यू कमाओगे. और दूसरा, it doesn't have an entry barrier. Which is very important, क्योंकि मैं अगर एक हॉस्टल के कमरे से चालू कर सकता तो मेरा बाजू वाला भी चालू कर सकता है. So entry barrier होना बहुत important. Now what I do, I have a very big entry barrier. So मैंने बोला कि ये नहीं हो सकता सर. We have to come up with something here. Since it's me, it has to do something with cinema.